हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो आज का टॉपिक है टेलीस्कोप। सो वी नो दैट द टेलीस्कोप इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो देखो यहाँ, ए टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल डिवाइस विच एनेबल अस टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली. It provide angular magnification of the distance object. Different types of telescope. A telescope can be divided into two categories. Number one, refracting telescope. Again, refracting telescope has two types: astronomical and terrestrial telescope. So astronomical telescope, it is used to see the heavenly object like sun, star, planet, etc. And the final image form is inverted one, which is immaterial in case of heavenly bodies because of their round shape. ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और सेकंड है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप. एंड टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप इट इज यूज्ड टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड द फाइनल इमेज फॉर्म इज इरेक्ट वन, एंड दिस इज द इसेंशियल कंडीशन फॉर viewing the object on the earth surface correctly. So refracting telescope has two types, astronomical and terrestrial. और नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, एंड दिस मेक यूज ऑफ कॉन्वर्जिंग मिरर टू व्यू द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल न्यूटोनियन एंड कैसग्रेरियन टेलीस्कोप. तो देखो यहाँ फर्स्ट पार्ट है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. इट इज अ रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप यूज्ड टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, सी द हेवनली बॉडीज like star, planet, satellite, etc. Construction, it consists of two converging lenses mounted coaxially at the end of two sliding tubes. Number one है objective. It is a convex lens of large focal length and much larger aperture. Objective of convex lens of large focal length and much larger aperture. It faces the distant object. In order to form the bright image of the distant object, the aperture of the objective is taken large. The aperture of the objective is taken large so that it can gather sufficient light from the distant object. Next है eyepiece. It is a convex lens of small focal length and small aperture. It faces the eye, and the aperture of the eyepiece is taken small so that the whole light of the telescope may enter the eye for distinct vision. तो आपको ध्यान में रखना है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज टू लेंसेज, ऑब्जेक्टिव ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड मच लार्जर अपर्चर, एंड आईपीस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर. ठीक है, अब देखो यहाँ वर्किंग में व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. ओके, तो देखो यहाँ ऑब्जेक्टिव ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर, ऑब्जेक्ट ए बी एट इंफिनिटी है. So a parallel ray of light is incident on the objective. This parallel ray incident on an objective after refraction will produce a image A dash B dash. ठीक है, तो image form A dash B dash ये क्या है? Real, inverted and smaller in size than that of object. This image A dash B dash will act like a object for eyepiece, and if object A dash B dash lies within the focus, if object A dash B dash lies within the focus of the eyepiece, it forms a virtual, erect and magnified image on the same side as that of object. But final image A double dash B double dash ये क्या है? Inverted with respect to the object. तो आपको ध्यान में रखना है कि when final image is formed at DDV, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि image produced by objective will behave like a object for eyepiece, and if image A dash B dash lies within the focus of eyepiece, it forms a virtual, erect and magnified image on the same side. Now again, magnifying power. The magnifying power of telescope is defined as the ratio of angle subtended at the eye by the final image formed at least distance of distinct vision. Angle subtended at the eye by the final image formed at least distance of distinct vision to the angle subtended at the eye by the object at infinity, alpha. Angle subtended at the eye by the object at infinity when seen directly. ठीक है, अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू माइनस
focal length of objective upon focal length of eyepiece into bracket 1 plus FE upon D. That is focal length of eyepiece upon distance of distinct vision. Here negative sign indicate that the final image is inverted with respect to the object. ठीक है, तो फर्स्ट फार्मूला आपको ध्यान में रखना है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में कि व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म एट DDV, मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू माइनस फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस into bracket 1 plus FE upon D. अब this equation clearly indicate that for large magnification, focal length of objective is kept much larger than the focal length of eyepiece. और construction में हमने पहले ही कहा था कि objective consists of large focal length and large aperture, whereas eyepiece consists of convex lens of small focal length and small aperture. तो यहाँ पे for large magnifying power, focal length of objective is much higher, larger than the focal length of eyepiece. And a negative sign for the magnifying power indicate that the final image is inverted with respect to the object. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट फार्मूला. सेकेंड फार्मूला है कि व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी. तो आपको ध्यान में रखना है कि अगेन ऑब्जेक्ट ए बी, पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द ऑब्जेक्टिव, इट फॉर्म अ रियल इन्वर्टेड इमेज, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश इमेज ऑन द अदर साइड. तो यहाँ पे इमेज है ए डैश बी डैश. दिस इमेज ए डैश बी डैश विल एक्ट लाइक अ ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस, एंड इफ ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश लाइज एट द फोकस ऑफ आईपीस, देन इट फॉर्म अ इमेज एट इंफिनिटी. ठीक है, तो देखो यहाँ व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द ऑब्जेक्टिव, इट फॉर्म अ रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश इमेज ए डैश बी डैश in its focal plane of the eyepiece. The eyepiece is so adjusted that the image A dash B dash lies exactly at the focus of the eyepiece. Therefore, the final image is formed at infinity and highly magnified. तो आपको ध्यान में रखना है कि when final image is formed at infinity, तो image formed by objective ये कहा चाहिए at the focus of eyepiece. So यहाँ पे वो magnified image produce करेगा at infinity, and for relaxed eye, that is for normal adjustment, that is when image is formed at infinity, magnifying power equal to minus focal length of objective upon focal length of eyepiece. Again, it indicates that for large magnifying power, focal length of objective must be much larger than the focal length of eyepiece, and negative sign for M indicate that the image is real and inverted. ठीक है, और यहाँ पे लेंथ ऑफ ए ट्यूब, that is distance between the objective and eyepiece. अब देखो यहाँ ये ऑब्जेक्टिव कहाँ इमेज फॉर्म करेंगे एट द फोकस, बिकॉज पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल मीट एट द फोकस, या इसकी इमेज प्रोड्यूस होंगी इन द फोकल प्लेन. तो ये हो गया डिस्टेंस एफ नॉट और ये हो गया एफ ई. ठीक है, सो लेंथ ऑफ द ट्यूब, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस. ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है नंबर 1, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म एट DDV, मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू माइनस फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इनटू ब्रैकेट 1 प्लस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस अपॉन D. एंड सेकंड, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी, मैग्नीफाइंग पावर M इक्वल टू माइनस फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस. ओके, नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप. So again it is used to see the distant object on the earth. ठीक है, अब यहाँ पे अर्थ में अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो मेन कंडीशन क्या है, द फाइनल इमेज मस्ट बी इरेक्ट. जैसे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड, बट इन दैट केस एज द हेवनली ऑब्जेक्ट आर स्फेरिकल इन शेप, तो उसमें कुछ फर्क गिरेगा नहीं. बट यहाँ पे आपको अर्थ के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो फाइनल इमेज क्या चाहिए, इरेक्ट. तो फॉर दिस वी यूज अ इरेक्टिंग लेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस. तो देखो यहाँ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, it is a refracting type telescope used to see the erect images of the distant earthly object. It uses an additional convex lens between the objective and the eyepiece for obtaining an erect image. As the erecting lens does not cause any magnification, the angular magnification of the terrestrial telescope is same as that of astronomical telescope. तो यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर देखो दोनों का फॉर्मूला सेम है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप.
सो मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, ये कब का, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी, दैट इज फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव साइन का इंडिकेट करने वाला है कि फाइनल इमेज इज इरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में माइनस था बिकॉज फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड। और यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस डायग्राम में देखो ऑब्जेक्टिव फॉर्म अ इमेज, रियल इमेज एट द फोकस, तो ये हो गया फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे इमेज ए डैश बी डैश विल एक्ट लाइक अ ऑब्जेक्ट फॉर इरेक्टिंग लेंस, तो यहाँ पे इट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस 2 times द फोकल लेंथ ऑफ द इरेक्टिंग लेंस, सो इट फॉर्म अ रियल इन्वर्टेड इमेज ऑन द अपोजिट साइड, ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2f। अगेन दिस इमेज एक्ट्स लाइक अ ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस, और अगेन ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे रखेंगे फॉर आईपीस, इट फॉर्म अ वर्चुअल इमेज एट इंफिनिटी, ठीक है, सॉरी, इट फॉर्म अ रियल इमेज एट इंफिनिटी। तो इसलिए लेंथ ऑफ ए टेलीस्कोप कितना रहेगा, L इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस 4f प्लस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। तो आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि व्हेन इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी, मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, and length of the telescope when final image at infinity equal to focal length of objective plus 4 times the focal length of lens plus focal length of eyepiece। और अगर फाइनल इमेज एट DDV है तो वहां पे मैग्नीफाइंग पावर एम इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इनटू ब्रैकेट 1 प्लस FE अपॉन D। तो अगेन प्लस, वहां पे क्या था, माइनस व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट DDV, और यहाँ पे लेंथ व्हेन फाइनल इमेज एट DDV इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस 4 times द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस UE फॉर आईपीस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसको रखेंगे विद इन द फोकस, इसलिए यहाँ पे FE की जगह क्या यूज करेंगे, UE, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूलेज आपको ध्यान में रखना है एडिशनल, और बाकी का मैग्नीफाइंग पावर दोनों केस में सेम रहेगा, सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल में नेगेटिव और टेरेस्ट्रियल में मैग्नीफाइंग पावर इज पॉजिटिव, ओके। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप वाज सेट अप बाय न्यूटन इन 1668, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज कॉन्केव पैराबोलॉइडल मिरर हैविंग ए होल एट द सेंटर, ठीक है। देयर इज अ स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर, देयर इज अ स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर नियर द फोकस ऑफ द प्राइमरी मिरर, नियर द फोकस ऑफ द प्राइमरी मिरर। द eyepiece is placed on the axis, eyepiece is placed on the axis of the telescope near the hole of the primary mirror। तो देखो यहाँ parallel ray of light from a distant object fall on the primary paraboloidal objective mirror। तो after reflection it will focus, after reflection it meet at the focus, but उसके पहले हमने यहाँ पे रखा है secondary mirror and this reflected light get again reflected, ठीक है, and this produce the image, this image will be seen by the eyepiece। तो यहाँ पे देखो F नॉट विद द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, मिरर। FE विद द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, आईपीस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। सो अगेन सेम फॉर्मूला फॉर द फाइनल इमेज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इनटू ब्रैकेट 1 प्लस FE अपॉन D, एंड फाइनल इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी। तो मैग्नीफाइंग पावर एम इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। और आपको ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, मिरर है, एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इक्वल टू R/2, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेलीस्कोप। अब इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। तो उसके पहले एडवांटेज देखो, द रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप हैज द फॉलोइंग एडवांटेज ओवर द रिफ्रैक्टिंग टाइप्स। नंबर 1, a concave mirror of large aperture has high gathering power and absorb very less amount of light than the lenses of large aperture।
So the final image formed in the refracting telescope is very bright. So even very distant or faint star can be easily viewed. Next है, due to large aperture of the mirror use, the refracting telescope have high resolving power. As the objective is a mirror and not a lens, so it is free from chromatic aberration. The use of paraboloidal mirror reduces the spherical aberration. The mirror required grinding and polishing of one surface only, so it costs much less to construct a reflecting telescope than the refracting telescope of equivalent optical quality. A lens of larger aperture tends to be very heavy and therefore difficult to make and support by edges. तो ये आपको सिर्फ एडवांटेज ध्यान में रखना है. नेक्स्ट है फॉर्मूला यूज. तो इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो आप. ठीक है. तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट माइनस फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, और डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस कितना रहेगा, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस. एंड व्हेन फाइनल इमेज इज एट डीडीवी, तो माइनस फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस 1 प्लस एफ ई अपॉन डी. एंड इन दैट केस डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस. और इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इंटू डी अपॉन एफ ई प्लस डी. And terrestrial telescope, same formula for normal adjustment, magnifying power equal to focal length of objective upon focal length of eyepiece, and length, focal length of objective plus 4 times the focal length of erecting lens plus focal length of eyepiece, where f is the focal length of erecting lens. And when final image is at DDV, focal length of objective upon focal length of eyepiece into bracket 1 plus f e upon d, or length of the telescope equal to focal length of objective plus 4 times the focal length of erecting lens plus object distance for eyepiece. ठीक है. अब देखो यहाँ फर्स्ट न्यूमेरिकल है. A small telescope has an objective lens of focal length. Objective lens of focal length 144 centimeter. And eyepiece of focal length 6 centimeter. What is the magnifying power of the telescope? ठीक है. And what is the separation between the objective and eyepiece? तो देखो यहाँ for normal adjustment, मैग्नीफाइंग पावर एम इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस. ठीक है. तो यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 144, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस 6, which is equal to 24, and length of the telescope for normal adjustment, focal length of eyepiece objective plus focal length of eyepiece, that is 144 plus 6, that is 150 centimeter. So first of what is the magnifying power of telescope, and second of what is the separation between the objective and eyepiece. ठीक है. नेक्स्ट है नंबर 2. द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इज 100. The distance between the objective and eyepiece is 101 centimeter. That is length of the telescope. Calculate the focal length of objective and focal length of eyepiece. अब देखो यहाँ मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट विच इज इक्वल टू 100. सो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव is 100 times the focal length of eyepiece. Okay. For normal adjustment, length of a telescope equal to focal length of objective plus focal length of eyepiece.
एंड लेंथ ऑफ ए टेलीस्कोप इज 101 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कितना है, 100 टाइम्स द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस प्लस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इक्वल टू 101। सो 101 times the focal length of eyepiece equal to 101 centimeter. So focal length of eyepiece 101 upon 101, that is 1 centimeter. ठीक है, तो focal length of eyepiece 1 centimeter and focal length of objective 100 times the focal length of eyepiece, that is 100 centimeter. ठीक है, नेक्स्ट है ए स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप फॉर viewing the distant object when number 1 the telescope is in normal adjustment, that is at infinity, and number 2 when final image is formed at DDV. So when final image is formed at infinity, मैग्नीफाइंग पावर एम इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 140 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस 5 सेंटीमीटर। सो मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू 28 एंड व्हेन फाइनल इमेज is formed at DDV. So magnifying power M equal to focal length of objective upon focal length of eyepiece into bracket 1 plus focal length of eyepiece upon D. So focal length of objective 140, eyepiece 5 into bracket 1 plus 5 upon 25. So 140 upon 5 into 5 plus 1 6 by 5. So for final image at DDV magnifying power is 33.6 and for infinity it is 28. ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का न्यूमेरिकल्स कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।